Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says we need to find the acceleration and normal reaction for the figure shown in the for the diagram shown in the figure. So, as a key concept, we need to understand to solve this problem. We need to understand about the concept of Newton's second law. So, according to Newton's second law, we can say the change in momentum is nothing but it is, or we can say the rate of change of momentum is द फोर्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें सो वी कैन राइट दिस वैल्यू हैज टू बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन द टाइम टेकन. सो फाइनल मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वी एफ माइनस ऑफ m इंटू वी आई अपॉन टी, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. अब ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, इट इज एक्सेलरेशन. सो फोर्स को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन. एंड टू बी प्रिसाइज दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी which is F net is equals to m into a, right? Being a vector quantity हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा. सो वी नीड टू बी केयरफुल कि जब भी फोर्स हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें सो सेम डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को वी नीड टू एड अप और इन द अपोजिट डायरेक्शन वी विल सब्ट्रैक्ट इट अप, right? So from this discussion we can answer the given question. Also we need to understand about the something called normal reaction. So normal reaction basically जब भी कोई बॉडी लेट से सरफेस पे रखी हुई है एंड इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सरफेस, सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ इट विल एक्सपीरियंस अ अपोजिट फोर्स इन द और वी कैन से ऑफ सेम मैग्नीट्यूड फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. सो लेट्स से सरफेस पे द वेट इज पुटिंग अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज mg if m is the mass of this block. So in that situation सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन exert किया on the block in the upward direction, right? So we can say n will be equals to mg, since we can consider if there is no vertical motion under that situation we can say n will be equals to mg, right? So this is the case we need to define. अगर कोई external forces होंगी so that force we need to consider in the balancing of the force, and accordingly normal reaction will get changed. So these are the basic understanding we need to have. अब बात करते हैं हमारे given question की. So अगर हम देखें so ये एक block रखा हुआ है, right? And this block has been pulled with a force of 100 Newton. एंगल हमें given है 60 डिग्री, राइट? एक फोर्स और लग रहा है इसके ऊपर 20 न्यूटन का इन द सेम डायरेक्शन, राइट? हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन निकालना है. सो एक्सेलरेशन निकालना है तो वी कैन राइट एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाली कौन सी होंगी, अगर इस फोर्स जो इंक्लाइंड है अगर हम उसके दो कंपोनेंट्स कर लें, सो वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, अनदर विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वी कैन सी के इट विल बी 100 cos 60 एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 100 sin 60, राइट? पहले तो हम इसके ऊपर सारी फोर्सेस शो कर देते हैं, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूलेज. सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ and vertically downward will be the weight of the body, that is mg in the downward direction, right? अब g is the acceleration due to gravity, we can take that value as well. So फिलहाल हमने forces लिख दी. So we will apply Newton's second law, that is the law of momentum भी हम इसे कहते हैं, along y axis, along x direction पहले हम अप्लाई करते हैं. सो एक्स डायरेक्शन में जब हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है? सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के एफ नेट हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस ऑफ 100 कॉस 60, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगी बिकॉज बोथ द फोर्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. सो मास इज बीन गिवन एज 10, एक्सेलरेशन हम लिख देंगे ए के ए एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है. सो 20 plus cos 60 is nothing but it is half, so ये हो जाएगा 50, right? And in this situation we can say this will be 10 into a, so ये हो जाएगा acceleration comes out to be 70 by 10, that is 7 meter per second square. So ये हो गया first part of the question. Now second part के लिए अगर हम ध्यान से देखें, so we have been asked to calculate normal reaction. So normal reaction along vertical है, so हम again यही Newton's second law we can apply along the vertical directions, right? So अगर हम देखें vertical direction में कोई force as such नहीं है जो कि इसे move कराए, right? So in that situation we can see since the block is on the ground, so it will be moving, sticking to the ground it will move. So in that situation we can see कि acceleration in the vertical direction will be 0. In that वो situation में हम क्या लिख सकते हैं, n
जो फोर्सेस ऊपर है हम ऊपर वाली फोर्सेस को लेट्स से पॉजिटिव मान लेते हैं. सो n प्लस ऑफ 100 sin 60, दिस इज द कन्वेंशन जस्ट वी कैन फॉलो. अपसाइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव. सो ऊपर n है, ऊपर 100 sin 60 और नीचे mg है. mg को हम क्या ले लेते हैं, 10 इंटू 9.8, राइट. सो mg अभी फिलहाल लिख देते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है कोई इसका अलोंग वर्टिकल. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10 sin 60, 100 sin 60 रूट 3/2. सो हो जाएगा 50. पहले तो हम mg को वहाँ पे कर देते हैं. सो 9.8 g की वैल्यू वी हैव टेकन, m 10 है तो 98 minus of 100 sin 60 will be 50 root 3, right. So this will be the value. We can say this answer comes out to be of n as 11.4 Newton. So this is the answer to the second part जो कि normal reaction है. So I hope you understood the solution. All the best.